Coming up on today's episode of the SaaS School podcast. A community-led strategy would usually play out well if the pricing isn't feature-based and it's volume-based. Correct. Right? So the more the company uses, the more they end up paying. Right. If they don't use it, they don't pay. Ladies and gentlemen, let's explore how growth, product, and customer success work together across SaaS companies. Welcome to the SaaS School podcast. And here's your host, Abhinav Arora. Abhinav, the stage is yours. Howdy, good folks. Welcome to yet another episode of the SaaS School podcast. Today I have a really interesting case study with myself. These guys, Prabhat and his company, Savo Labs, these guys started out in the pandemic, in the lockdown, started out completely remote, built a company that has $4 million in annual recurring revenue today. And these guys, while I talk about sales and sales reps and I meet all these, guys who do marketing and sales, these guys have no marketing rep, no sales rep. These guys grew totally via community. How did you make it happen? Glad that we are talking about community in itself, right? Because I remember us talking about how we don't want to just refer to the Silicon Valley case studies of community or product or anything of that sort, right? So 4 million revenue, 12,000 community members, and all of it just out of community members, no sales rep at all, right? I'm the only guy who talks to users about the product. Of course, I have people who do it for me. We would like to not call them sales reps. We would like to call them the community team, right? So community leaders. The community leaders who talk to the community regularly and ensure that the product seeps in. Sales reps were doing that, but too cold to be precise, right? That's what we associate sales to. Community makes it more warm, more cozy, more inclusive, more value driven. Indeed. So before we get into your strategies, tell me what's the success been like? Who all are your clients? How did they pick up what they picked up? I love to associate Savo with the number that we've achieved, right? So 4 million ARR, 9,000 clients. All out of this is just associated to the fact that we have been able to drive value to 9,000 users. Out of top 5 cryptocurrency exchanges, which crypto is very popular, by the way, and crypto exchanges in India. Web3 is community first. Yeah, you don't care about how much revenue you have. You're like, how big is your Discord server? Exactly. That's the word in NFT. Ownership hai. Modern businesses in itself constitute to a huge amount of annual earning that India has in terms of technology, right? And everything that we see around this mic, where you are sitting, where I am sitting, everything is associated to modern technology. And modern technology, exactly like 2021, is going to associate itself to the maximum growth that a country has seen. And all of that right now, I believe, like you mentioned, Web3, it will be associated to the users having some kind of ownership in the product. And community did that to 9,000 people who pay for the product today. And all of that has happened without a sales rep, just because we believed that it was important to show the value first and then sell later. Crazy. Tell me, what kind of clients have you managed to get? Usually applications that require users to come in again and again. In fact, top 3 of 5 cryptocurrency trading exchanges in India are using the product. So a CoinSwitch would be using a product. Okay. A lot of others. And you have tiers. So CoinSwitch obviously doesn't pay just $1,000 a month. They'd be paying more than that, right? It would be essentially the consumption. A community-led strategy would usually play out well if the pricing isn't feature-based and it's volume-based. Correct. Right? So the more the company uses, the more they end up paying me. Right. If they don't use it, they don't pay me. So essentially, there is no downside to all of this, right? And the point is, I don't need sales reps to go and upsell the product, right? I don't have features that I have to convince them to use for. That way, the human touch reduces. That way, the product just scales because a consumption of a client would basically increase. Right? So your only sales strategy here is a community of active developers who love you, and they just recall your name whenever they're faced with a situation that needs you. Yeah, that essentially contributes to the continuous growth of the product, and that would only be because I'm able to reduce the effort of a dev. Developers are humans, and humans tend to be selfish like us, right? So essentially what happens is a developer would not like the product until the developer is able to reduce effort. अगर मेरा काम कम होता है तो फिर मैं प्रोडक्ट यूज कर लेगा, राइट? और मुझे तो पे नहीं करना ना, ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगा, नहीं तो नहीं पे करेगा, अगेन वॉल्यूम बेस्ड. अगर ये कोई और कंपनी
use करना चाहिए this model of community-led growth, which you guys have so fantastically cracked. The only people who you talk to are your community folks. Yes, And yes. when your clients face any trouble, that's when you get on a call. Otherwise, there is no call that's happening. Again, that happens to the community too. There is no customer service involved. There's nothing. So community helps them out. So it's Yes. like a customer success, customer support, customer referral, everything's there. Everything. Any interesting instances that you think will help other folks build a community as strong as yours? Sure. Essentially, see, the problem with SaaS products across multiple generations that we've seen. What we all started with using products that could be installed, right? And then we used to pay license fees. Right. That's how. Not an antivirus. I remember I'd buy CDs and do that shit. Weird stuff, right? So Yeah. I would have to install a license, have to use it. It's the same reason why MS Office got disrupted. The same reason why your Photoshop got disrupted, right? The more friction you get involved in the overall process, the reduction in usage at some point will happen. I genuinely believe that sales has nothing to do with revenue. Dude, there is a school of thought and a bunch of people who would differ with you on selling to enterprise without having involved a sales rep. Sure. Have you guys been able to do? I mean, CoinSwitch, you told me yes, you've been able to do without a sales rep. I can tell you something, right? India's second largest private bank runs India's third largest security exchange application. I'm talking about Kotak Securities. Kotak is as archaic as you can think of. They're very enterprisey, right? A typical salesperson inside you or me would have thought that, it's a 6-month sales cycle now because a bank is Or involved. possibly a year. Archaic. A bank is involved, right? Do you know how many days it took? I would like to say that on record, right? It took me 3 days, right? I'll tell you why. If it's a volume-based pricing, it's very easy to justify to a Kotak that, you are using it that much, that's why I have to pay. And now, how will you make them believe that they have to use the product? कितना पे करना है वो तो सॉल्व कर दिया हमने कि वॉल्यूम ज्यादा है, यूसेज ज्यादा है, तो पे करना पड़ रहा है. नाउ क्यों यूज करना है कम्स इनटू प्ले ओनली बिकॉज कि यार ये 12 डेवलपर तेरी कंपनी में 12 डेवलपर को मेरा प्रोडक्ट पसंद है क्योंकि उसको कोड नहीं करना है. अभी वो कोड करेगा तो एरर आएगा, ह्यूमन एरर आएगा तो फिर तेरा टाइम और बढ़ेगा. यार यू एंड आई हैव डेल्ट विद डेव्स, वी आर वेरी श्योर दैट 60 घंटे बोले तो 120 घंटे होने में टाइम नहीं लगता है, राइट? इट विल डेफिनेटली एक्सटेंड बिकॉज बग्स आर अ प्रॉब्लम दैट वी ऑल फेस. प्लग एंड प्ले सॉल्यूशंस come there, right? That's what SaaS was supposed to do always. SaaS was supposed to reduce effort, increase quality, and of course make me pay only because I want to use the product because I love it, not because I have to. Right? Essentially why I named Photoshop, right? Photoshop was a product that I have to use because edit तो कहीं और कर ही नहीं पाऊंगा ना यार. इसलिए Canva आया. Canva said you would love to use it. And by the way, our organizations might have used Canva. We all must have paid for it. But I'm sure none of the Canva sales reps ever talked to us. Even Notion and Microsoft Teams, very self-serve products. Yeah. These products can very realistically grow from bottom to top, right? They can. But what ends up happening that even in Slack, Notion, and Microsoft Teams, you would have enterprise sales team that would be selling to enterprise in a top-down approach. Perfect. That does happen. You guys didn't do that. I'll tell you, there might be a chance that we might have to do that at some point, right? But I would. So you're not discounting entirely. But you're saying that it can happen. Yeah, I'm saying that it's possible. If I could do it at 4, I might not be able to do it at 40. But I'm sure that all I'm trying to tell the audience here is that यार अगर 0 से 4 जाना है और तुमको ये लगता है कि तुमको उसके लिए फंडिंग उठानी पड़ेगी, लोग चाहिए बहुत ज़्यादा, तो यार फंडिंग तो उठानी चाहिए. बट लोगों की ज़रूरत नहीं है. बर्न रिड्यूस कर सकते हैं. आई एम वेरी मच डिस्काउंटिंग दिस दैट 0 to 1 तो जा ही सकते हैं बिना सेल्स रेप्स के. ठीक है प्रभात, ये तो ठीक है, ये समझ गया मैं. एंड आई थिंक मोस्ट क्रिटिकल फेज फॉर अ स्टार्टअप इज द 0 to 1 जर्नी. जब तुमने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट की कुछ एडॉप्शन दिखा रहा, यू सेइंग दैट कैन टोटली हैपन विदाउट हायरिंग एंटरप्राइज सेल्स टीम एंड स्पेंडिंग crazy money on that. So we also talk a lot about community. We propagate the idea of community, and whatever we are is because of community. I want to know what your journey of community is, and if you can break it down into a framework that anyone and everyone who's building a B2B business can use for themselves. First of all, there is no substitute to a product that anybody can like. Build a great product. Done. And by the way, it's very difficult to define what a great product would be. Rider ये है कि community उसमें भी define कर देता है. कोई भी business को 0 to 1 लेके जाने के लिए 3 ही चीजें चाहिए होती हैं. Product, users, और फाइनल वैल्यू ड्राइविंग टू कन्वर्ट द यूजर इनटू अ प्राइसिंग मॉडल. अभी ये जो प्रोडक्ट का जो एस्पेक्ट है,
यार बना तो हम कुछ भी सकते हैं और बट द पॉइंट इज कि इसके लिए डिमांड कैसे एसोसिएट करें. आई एम श्योर यू हैव बीन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर अ व्हाइल. तो यार यूजुअली क्या होता है कि हम 1000 यूजर से बात करते हैं, यूजर रिसर्च करते हैं, पूछते हैं कि यार वुड यू लाइक और नॉट. पॉइंट ये है कि ये 1000 यूजर का अपना बायस है. करेक्ट. और ये जब तक ये पे नहीं करते ना तो ये लोग सबको तो अच्छा ही बोलेंगे. और ये हुआ है हमारे साथ, सबके साथ होता है. राइट. एसेंशियली व्हाट हैपेंस विद द कम्युनिटी इज दैट यार यू ब्रॉट देम इन बाय गिविंग देम द वैल्यू ड्राइवर फर्स्ट. ये यूजुअली बिजनेसेस बाद में करते हैं. Okay. राइट. तो आप वैल्यू ड्राइवर पहले दिन पे दे दो कि यार इफ यू एसोसिएट विद मी, हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, बट यार मेरे कम्युनिटी में यू विल गेट कनेक्शंस, you will get to deal with a lot of good content which might help you build a product. Usually try to associate that to the things that surround your product. For example, in my case, I associate it to UX because पासवर्ड लॉगिन है तो लॉगिन तो यार UI UX का फ्रेमवर्क का पार्ट है, तो मैं इमीडिएटली UX और UI से एसोसिएट कर देता हूँ. फिर बोलता हूँ आई विल टॉक टू यू रेगुलरली ऑन हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट. तो उससे ये होता है कि यार 100 लोग तो मिल जाएंगे जिनको ये डिस्कस करना है. बात करने वाले तो मिल ही जाते हैं. तो अभी ये 100 को 1000 किया, 1000 को 1500 किया, इनसे ये कंटेंट ड्राइव करते रहा. अभी इसको कभी प्रोडक्ट से एसोसिएट मत करना बिकॉज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कम्युनिटी के साथ कभी नहीं हो सकता. नाउ it's important for these members in the community to know that the value that they are providing to you is turning into something, right? So essentially product roadmap उनके ऊपर ही बनाओ, right? तो जो तुमको 1000 यूजर्स पहले हम जो बात कर रहे थे कि सर्वे से एसोसिएट करते हैं, तो वो यार ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है. एक बार पूछा चले गए, ये 1000 रूम में है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड हो गई. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको क्रेडिबिलिटी मिलती है. राइट. इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स हैं, स्वैग्स कर लो, बहुत कुछ कर लो. द आइडिया इज टू मेक देम फील लव्ड. द आइडिया इज टू नो दैट दे नीड टू नो दैट यू आर बिल्डिंग फॉर देम. सो मैं प्रोडक्ट रोड मैप उनके ऊपर बनाता हूँ. अभी उनसे बात करता हूँ रेगुलरली और फिर प्रोडक्ट देता हूँ. वो लोग फीडबैक बताते हैं. यू शिप प्रोडक्ट टू देम, यू शिप एवरी रिलीज टू देम. नाउ दीज रिलीजेस they would the two ways, either build a closed community where you are saying, you know what, you are a set of users who would get early access to the beta. Okay. यार क्लोज कम्युनिटी मतलब गेटेड कम्युनिटी. अंदर आने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, राइट. तो उनको यार अर्ली एक्सेस टू द बीटा दे दो. तो अभी ये और स्वैग एक ही चीज है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्लूजन और इंसेंटिव मिल रहा है. या तो चलो नहीं देते हैं, क्लोज कम्युनिटी नहीं करते हैं, ओपन कम्युनिटी करते हैं. 12000 लोग हैं. अभी इन सबको फीचर शिप करते रहा, उनको बोला कि यार तुम बताओ कि अभी इसमें और क्या करना है. तो वो पहला बात तो ये बताएंगे कि यार नहीं, तुम्हारा प्रोडक्ट ही फक कॉल है, और छोड़ो ये बताओ कि ये बग्स क्यों नहीं ठीक हो रहा है. राइट. तो उससे तुम्हारा प्रोडक्ट टीम रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. करेक्ट. उससे यू हैव अ डेडलाइन कि अभी यार भी बोल दिया है तो अभी करना पड़ेगा. सी वन थिंग दैट कैन नेवर बी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस होल प्रोसेस इज टू हैव अ किक-एस कम्युनिटी टीम. राइट. बिकॉज ये 12000 लोग तुमसे मैनेज नहीं होने, किसी से नहीं होना. राइट. सो अ किक-एस कम्युनिटी टीम वुड एसेंशियली कन्वर्ट दीज रिक्वेस्ट इनटू इनसाइट्स. ये ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द वन थिंग दैट यूजर्स कैन इमीडिएटली स्टार्ट क्वेश्चनिंग इज यार अभी ये क्रेडिबिलिटी क्या है अभी ये 12000 यूजर का. अभी बोलो तो कुछ भी बोलते हैं और तुम उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना लो, अच्छा नहीं रहा तो. सो देयर लाइक ट्रांसलेटर्स, दे एक फिल्टर तो चाहिए. या देयर एक फिल्टर तो चाहिए. एंड द पॉइंट इज कि इससे ये हो जाता है कि एट सम पॉइंट यू विल स्टार्ट डिस्कवरिंग चैंपियंस इन द कम्युनिटी जो कंटिन्यूअसली तुमको एक एक्स चीज देते जा रहे हैं. और वो मेट्रिक जो तुम्हारा कुछ यूजर्स के लिए शूटर है, उससे तुमको मिल जाता है एम्बेसडर्स, जो हमने सबने किया है. कॉलेज एम्बेसडर जैसे हो गए वैसे कम्युनिटी एम्बेसडर्स हो गया. अभी नाउ ये लोग प्रोपेगेटर्स हैं. राइट. सो अभी जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी होती जाएगी, ये लेयर्स मल्टीपल होते जाएंगे. पोस्ट दिस व्हाट हैपेंस इज you have started co-creating the product. Now the product is ready. Now one thing that I told you earlier is you have started creating a good product, a great product, because now 12,000 people are telling you great product है. अभी पॉइंट ये कि कम्युनिटी के साइज से ज़्यादा कम्युनिटी क्वालिटी भी मैटर करती है. तो वो भी तो कंट्रोल होता जाएगा इन एम्बेसडर्स की वजह से. राइट. अभी ये यूजर्स कहाँ से आएंगे. राइट. अभी ये यूजर्स इसलिए आ रहे हैं यार, अभी ये 12000 को पता है कि जो भी तुमने उसको बोला वो तुम सॉल्व कर रहे हो. यहाँ पे आ गया आपका कस्टमर सक्सेस, कर दिया सॉल्व विदाउट हैविंग अ कस्टमर सक्सेस टीम. नाउ अभी ये 12000 लोग कहीं तो काम कर रहे हैं. राइट. द पॉइंट इज एंटरप्राइज सेल्स और कम्युनिटी को तब लिंक कर सकते हो तब तुमको पता है कि एग्जैक्ट यूजर बेस कौन है. तो वो तो पहले से पता होना चाहिए. दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी अ फाउंडर फॉर. राइट. सो फाउंडर का जॉब ही वो है कि यू डिफाइन द यूजर फर्स्ट एंड बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड दैट. आई हैव सीन ट्वाइस दैट द कम्युनिटी ऑल्सो टेल्स यू हु योर यूजर इज, बिकॉज जो सारा तुम्हारे प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहा है ना, उसको फर्क पड़ता है तुम्हारे प्रोडक्ट से. राइट. वो सिर्फ तुम्हारे वैल्यू ड्राइवर के लिए नहीं आया, तुम्हारे प्रोडक्ट के वैल्यू ड्राइवर के लिए आया. सो नाउ वहाँ पे यूजर आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है. बट इट्स बेटर यूजुअली टू बिल्ड द कम्युनिटी अराउंड द यूजर than to build a user around a community.
अभी कम्युनिटी वाले लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए तो नंबर वन चीज़ ये है कि यार प्रोडक्ट का फ्री ट्रायल होना चाहिए. बिना फ्री ट्रायल के ये कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. सो नाउ दीज पीपल विल टेक द प्रोडक्ट to wherever they are from, and that's how your community would grow, that's how your product would grow, that's how you will get a user base. Like we have always seen Slack, Notion, यार फ्री ट्रायल यूजर्स मिल जाता है, मोनेटाइजेशन के लिए करने के लिए एक सेल्स रेप की ज़रूरत पड़ती है. वो इसलिए क्योंकि नोशन, स्लैक और इन सब का फीचर बेस्ड प्राइसिंग है. अगर वॉल्यूम बेस्ड होता तो सेल्स रेप की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो पैसे देने पड़ेंगे ना यार. The point is कि यार my major apprehension to feature based pricing is that usually users को आदत हो जाती है to get value out of the free trial itself. We all have seen that with Canva. तो ये समझ लेते हैं कि free trial शब्द ही सही नहीं है. Free trial की जगह we should have used the word freemium. Right? Correct. तो freemium as an economic model helps us drive value into the product through the volume aspect. अगर मेरी वॉल्यूम वाली बात होती और समझो वैल्यू 12 डेवलपर्स की टीम है, 12 डेवलपर्स की टीम में से 8 लोग को वैल्यू पसंद आ गया, प्रोडक्ट इंटीग्रेट हो गई क्योंकि उनको काम नहीं करना. अभी यही तो ओपन सोर्स के साथ भी हो रहा था ना यार. ऑल ऑफ अस स्टार्ट यूजिंग ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स बिकॉज वी लव इट. कम्युनिटी है. कभी कोई ओपन सोर्स वाला जाके बेचा क्या? नहीं बेचा. What's your favorite open source community? Hasura is a funded startup, a SaaS startup like all of us love. And Hasura was started by two people who love building products. They didn't want to get into this whole drama of selling to anybody. They just wanted to build. So yeah, they built a community of 2.5 million people within 3 years. So didn't sell for a penny. Made an audience base of 2.5 million. तो यार ये आ गया distribution. Community बना ली, user base मिल गया, value driver हो गया, product भी ready हो गया. बस pricing layer नहीं था. तो हसुरा ने बोला आके कि you know what, open source का सबसे बड़ा problem ये था कि I didn't have enough bandwidth to find 30 people who would pay for it, because अब ये 30 people सबसे ज़्यादा contribute कर रहे हैं इस product को, तो they want to use this more and hence they want to pay for it because they want X things over it. So they start building a layer on it, and this layer essentially helped them justify the pricing. So Hasura built Hasura Cloud, and Hasura is where it is. So essentially क्या हुआ कि take Hasura, take whoever, right? I would say let's take the most trending aspect. Let's talk about Notion in itself. Notion didn't have reps, didn't have ads, didn't have anything. They talked about it in a forum where they found their users to be, Reddit. Communities usually start from finding the initial 100 users, right? So it's better to find it on platforms like Twitter, Reddit, where you would have more intellectually stimulating audience, which would lead to a certain user base, which might lead to a certain pricing model eventually. Notion didn't go to a Facebook. They went to a Reddit because it was important for them to find the audience that would use the product eventually, right? So ये Slack ने भी वही किया था. Like Slack को लगा कि यार मैं XYZ को बेचने से अच्छा I'll talk to a dev community, और dev से ही खींचा, right? अभी सब यूज़ करते हैं Slack. Community led growth का फर्स्ट एस्पेक्ट ही 0 to 1 था, तो Notion वहाँ से चालू किया, फिर उसके बाद फर्स्ट 100 यूजर्स आ गए, 100 पे प्रोडक्ट बिल्ड किया. Notion has been there since 2013, by the way. The lovely part is there are only 2 features which made them the norm. That is? One, they just became word doc on steroids, right? ये realize हो गया यार ये URL शेयर करना भी प्रॉब्लम है. पहले तो यार डाउनलोड करके हम भेजते थे डॉक्यूमेंटेशन, फिर मालूम पड़ा कि URL भेजने में इशू है बिकॉज एक्सेस, नो एक्सेस, कितने सारे URL कंट्रोल नहीं, होस्ट कर दो यार, ठीक है, तो होस्ट कर दिया. फिर मालूम पड़ा कि यार ये सुंदर वेबसाइट वाला कॉन्सेप्ट जा चुका है, मुझे भी कंटेंट चाहिए. सुंदर वेबसाइट, राइट. सो तो नोशन वाज लाइक यू नो व्हाट, आई जस्ट पुट टेक्स्ट and that will become a website if I can sell it properly. Correct. Right. And वो कर लिया because यार community से just पहले ना content led growth का सीन था. Right. सब लोग content और education से बेच रहे थे. बट फिर community इसलिए आया क्योंकि सबको लगा कि यार ये content सबको देने से अच्छा, और फिर उसमें से यूजर ढूंढने से अच्छा पहले यूजर ढूंढ के उस पर कंटेंट जनरेट करते हैं ताकि एफर्ट कम हो, फ्रिक्शन कम. आफ्टर ऑल ऑफ दिस नोशन रीच द स्टेज वेयर नोशन कुड जस्ट हैड टू पुश टू फीचर्स. वन वाज दिस होस्टिंग एंड द सेकंड वाज अ वेबसाइट पार्ट दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, राइट. सो जब जैसे ही वो किया नोशन ब्लू अप, एंड बट ये 2 करने के लिए 8 साल लग गए. Fair enough. That's not that's not a big time considering
they needed the timing to be right. And that timing Yeah, happened to be right exactly. towards the last few years. Exactly. Dude, Prabhat, all of this is great, but you know what I'm really proud of and what you make me proud of is we hear Notion's case study is all over there. You can just do a simple Google search and understand how Notion grew via community. You can understand how Product Hunt became a community and grew via Twitter community. You can understand how Notion reminds me Rome Research. They also sort of have a Exactly. cult. They're also growing via community. So you will find all of that. But these Indian case studies are very few to find. And I'm glad. I think you've given me the privilege to be one of the first voices that bring out Savo Labs ka story Sure, out sure, there. man. Sure. I hope you're not gonna infringe this privilege and get someone else Sure, to man. cover your story before us. Second was Hasura, of course. So we should try that out. And I think that's the essence of this podcast as a whole. Bring out Indian SaaS stories because there's so much happening in India. And I'm just like practically tired of Silicon Valley podcasts. Oh, Because definitely. that's all we hear about. Definitely. Community-led growth, oh, Notion. Something, oh, yay. Exactly. I want to talk right. about Savo Labs. Oh, this is awkward, by the way. But thanks a lot, man. Kudos on your success. Thanks a lot, folks. Thank you This so much. is a Thank you wrap. so much, Abhinav.